Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmiya Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 7th maths, and it's time to revision. Revise the chapter fraction and decimal. In fraction and decimal, yesterday we revised what is fraction. Okay, let's start revise and then we go for decimal. Okay, fraction is a part of whole. Okay, in a fraction, p upon q, p is a numerator and q is a denominator, where p and q both are natural number. Okay, a fraction with numerator less than the denominator is called a proper fraction. Otherwise, it is an improper fraction. Understand? Okay, two or more fraction with the same denominator are called like fraction. Fraction with different denominator are called unlike fraction. Fraction with different denominator are called unlike fraction. Sum of like and unlike like fraction are sum of the numerator upon common denominator. Okay, difference of the like fraction is equal to difference of the numerator upon common denominator. Or for adding and subtracting unlike fraction, we take LCM of the denominator and convert the fraction into like fractions. Okay, multiplication of fraction is a commutative as well as associative. Okay, and two fractions are multiplied by multiplying their numerator and denominator separately and writing the product as product of numerator upon product of denominator. Understand? Okay, a fraction acts as an operator of, for example, 1 by 3 of 3. That means 1 by 3 multiply by 3. If there is of, then you have to multiply both the number. Okay, the product of two proper fraction is less than each of the fraction. For example, 1 by 2 into 1 by 3 is equal to 1 by 6. Okay, and 1 by 6 is less than both 1 by 2 and 1 by 3 also. Okay, the product of a proper and an improper fraction is less than the improper fraction and greater than the proper fraction. For example, 1 by 2 into 3 by 2, so we get 3 by 4. Okay, or 3 by 4 is less than 3 by 2 but greater than 1 by 2. Okay, if we multiply two fraction, one is proper and another one is improper, so what is the answer? Our answer is less than improper fraction and greater than proper fraction. Okay, the product of two improper fraction is greater than the two fraction. For example, 3 by 2 into 7 by 4 is equal to 21 by 8. Okay, understand? So this is short revision. Now, what is reciprocal of a non-zero fraction is obtained by interchanging the numerator and denominator. For example, reciprocal of 3 by 2 is 2 by 3. Reciprocal of 3 by 2 is 2 by 3. While dividing a whole number by a fraction, we multiply the whole number with the reciprocal of that fraction. For example, 3 divided by 1 by 2. If we divide 3 by 3 divided by 1 by 2, then what is the meaning of 3 into 2 by 1? What is the reciprocal of 1 by 2? Reciprocal of 1 by 2 is 2 by 1. Okay, you remember I will told you K, F and C. So K means keep the first number, flip the sign. Okay, division into multiplication, and convert the second number into its reciprocal. Okay, understand? So this type, what is the answer? 3 into 2, that is 6. 6 is your answer. Okay, understand? Now, while dividing a fraction by a natural number, we multiply the fraction by the reciprocal of the natural number. For example, 1 by 4 divided by 2 means 1 by 4 into 1 by 2. Okay, if we divide two fraction, okay, if we divide fraction by a rational by a
natural number, then what we do, 1 by 4 as it is, flip the sign, and 1 by 2. Reciprocal of 2 is 1 by 2. Okay, so you get 1 by 8. 4 into 2, 8. Okay, understand? Okay, now we learn about decimal. What is decimal? Decimal are fraction whose denominator are 10, 100 and 1000. Okay, suppose we have tell 2 by 10, 6 by 100, 7 by 1000, etc. are called decimals. Okay, understand? Now, the number written in the decimal form are called decimal number. The number of digit contained in the decimal part of a decimal number is known as number of decimal place. Okay, understand? Now, what is decimal? Decimal are fraction whose denominator are 10, 100 or 1000, etc. Okay, a decimal has two parts. Whole number part, it is 1 on the left side of the decimal part point. Means if we tell, so this is your whole part. Okay, means लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो रहेगा वो आपका कौन सा पार्ट रहेगा, होल पार्ट. ओके, एंड आफ्टर द डेसिमल मीन्स राइट हैंड साइड पर जो पार्ट होता है डेट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट. ओके, इन डेसिमल नंबर देयर आर टू पार्ट. डेसिमल के पहले वाला जो होता है बिफोर द डेसिमल मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल इज कॉल्ड होल पार्ट, एंड राइट साइड ऑफ द डेसिमल इज कॉल्ड decimal part. Okay, understand? Now let us understand this with the following example. If we take the example, let's take the number 26.144. okay, yeah, 1. Okay, now what is expanded form of this number? If we want to find, this is our whole part, this is our whole part, this is our decimal part, this is decimal part. Okay, understand? Or this is our whole part. Okay students, or now this point is known as decimal point. This point is known as decimal point. What is expanded form of this number? We can write 2 into 10 plus 6 into 1 plus 1 upon 10, 4 upon 100 plus 4 upon 1000. Okay, understand? So this is our expanded form of decimal number. Type of decimal, there are two type of decimal according to the number of decimal place they have, like decimal and unlike decimal. What is like decimal? Decimal having the same number of decimal places are called like decimal. Okay, for example, we have tell you 4.527 and see if the number is 32.628. So here after decimals three digits are there, and here also 3 digits are there, so they are called like decimal. Okay, we see only डेसिमल के राइट साइड की डिजिट्स को आपको देखना है. अगर वो सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 डिजिट्स हैं, तो हम बोलेंगे ये दोनों डेसिमल कैसे हैं, लाइक डेसिमल है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट इज अनलाइक डेसिमल? डेसिमल हैविंग एन अनइक्वल पार्ट, अनइक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल. अंडरस्टैंड? So this type of decimal are called unlike decimal. Now by adding 0 to the extreme right digit of the decimal part does not alter the value of the decimal number. So unlike decimal can be changed into like decimal by adding 0 to the extreme right of the decimal part. Okay, understand? Suppose आपके पास में कोई नंबर है, अनलाइक डेसिमल है, आपको अगर उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, व्हेन यू वांट टू ऐड और सब्सट्रैक्ट टू डेसिमल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to convert it into like decimal. And what is like decimal? If we talk about like decimal, so always like decimal having equal places. Okay, after the decimal point they have equal digits.
Okay, if they have not equal digit, that means they are unlike decimal. See one example. If I talk about 8.6, one more, that is 5.74 and 1.356. These three are numbers, okay, decimal numbers, but they all are unlike. They all are unlike decimal. Why unlike? Because here after decimal only one digit, here after decimal only two digit, and here after decimal only three digit. If we want to compare, add or subtract it, then we have to convert it into like decimal. How to convert it into like decimal? See, if you want to convert, see here, most सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे ज़्यादा डिजिट कहाँ दिख रही है? 1.356. ओके, मीन्स थ्री डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, थ्री डिजिट. हमें थ्री डिजिट अगर हम तीनों में कर देते हैं तो हमारे कैसे हो जाएंगे? लाइक डेसिमल बन जाएंगे. सो फर्स्ट कन्वर्ट 8.6. सो वी हैव जस्ट पुट जीरोस 20, तो ये थ्री डिजिट हो गया. यहाँ पर मुझे ओनली 5.740 ओनली 10 पुट करना पड़ेगा. यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है. नाउ दे बिकम अ लाइक डेसिमल. ओके, बिकॉज ऑल द थ्री हैविंग थ्री डिजिट्स. Okay, so it is very simple to convert unlike decimal into like decimal. Remember student, always you have put zeros rightmost digit. Okay, आपको हमेशा कहाँ पर ज़ीरोस पुट करने हैं? अगर ज़ीरो पुट करना है आपको तो यू हैव टू पुट डेसिमल नंबर, मीन्स बाय एडिंग ज़ीरो टू द एक्सट्रीम राइट डिजिट ऑफ द डेसिमल पार्ट डज नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर. मीन्स अगर आप पीछे की साइड ज़ीरो ऐड करते हो तो वो डेसिमल की वैल्यू चेंज नहीं करता है. अंडरस्टैंड? आप इस नंबर को अगर आप सोचो कि मैं बीच में ज़ीरो ऐड कर दूँ तो ये आपका डेसिमल नंबर चेंज कर देगा. 704 नहीं हो सकता है. क्या होगा ये? 740, बिकॉज यहाँ 74 इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू. Okay, understand? So this type you have to convert unlike decimal to like decimal. Okay, comparing and ordering of decimal. If you want to compare or ordering the decimal, first you have to convert it into like decimal. To compare two decimal, we first compare their whole part. ओके, सबसे पहले आपको क्या पार्ट, कौन सा पार्ट कंपेयर कर लेना है? होल पार्ट कंपेयर कर लेना है. इफ़ द होल पार्ट इज सेम, the decimal having the greater whole number part will be greater. Okay, if two decimal have their whole part equal, then we compare the digit on the right of the decimal point starting from the 10th place. Okay, अगर आपकी दोनों होल पार्ट इक्वल हैं, सपोज टेकिंग वन एग्जांपल, सपोज वी हैव 52.762 and one more 52.984. if these are two numbers and we want to compare these two number. now first see whole part. अगर आपका होल पार्ट देखने जाते हो तो होल पार्ट दोनों का सेम है. 52 ऊपर भी है नीचे भी है. नाउ वी हैव टू सी द डेसिमल पार्ट. ओके, नाउ वी हैव टू सी द डेसिमल पार्ट. ओके, सो सी 7 और 9 कौन सा बड़ा है? फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे 7 एंड 9, विच इज़ ग्रेटर. 9 इज़ ग्रेटर देन 7. सो वी हैव टू ईजीली राइट 762 इज़ लेस देन 552.984. Understand? This type you have to complete the questions. Okay. So student, to compare two decimal number, which steps you have to follow? Convert the given decimal into like decimal. First of all, if they are not like, then first convert it into like decimal. Compare whole number part. The decimal number with greater integral part will be greater. Okay, if integral part are equal, means decimal के बाद के digits equal हैं, तब आप क्या करोगे? Compare the digit at 10th place. The decimal number with the greater 10th digit place will be greater.
ओके। अगर वो भी इक्वल है तब आप कहाँ जाओगे, 100 प्लेस पर देखोगे, ठीक है। कौन सा ग्रेटर है, अगर 100 प्लेस पर देख रहे हो, 100 प्लेस पर कौन सा डिजिट बड़ा है, दैट विल बी ग्रेटर नंबर। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव लर्न how to decimal as a fraction. If we want to convert decimal into fraction, so we convert the given decimal into an equivalent fraction, okay, with the denominator 10, 100 and 1000 depending on the place of decimal after removing the decimal point from the numerator. If we want to if there is two decimal, let's take 0.05 and you want to convert it into fraction. So what you do, only you have to write how much digit are there, 2, then you have to write 2 zeros. ओके, सो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, डेसिमल नंबर हटा सकते हो। मीन्स आप 0.05 को 5/100 लिख सकते हो। ओके, वन मोर थिंग, अगर हमारे पास कोई नंबर है 2.064, हाउ मच डिजिट आर हियर, 3। टोटल कितनी डिजिट दिख रही है डेसिमल पॉइंट के बाद में, 3 डिजिट दिख रही हैं, तो आपको लिखना है 64/1000, 1 2 3। ओके, डेसिमल कब हट जाएगा, जब आप जितनी डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद में उतने ही जीरोस नीचे लगा देंगे। ओके, सो दिस टाइप यू हैव टू कन्वर्ट डेसिमल एज फ्रैक्शन। और सेम हियर, अगर फ्रैक्शन है कोई नंबर, अगर इस टाइप से लिखा हुआ है आपके पास में कोई नंबर है, suppose you have any number 275/100, then what you do, if the number is this type, so how many zeros are here, 1 and 2, so आपको मोस्ट राइट मोस्ट डिजिट से काउंट करना है, 1 and 2 काउंट करिए, 1 फर्स्ट वन इज़ 5 एंड सेकेंड वन इज़ 7। ओके, सो यू हैव टू पुट 7 के आगे आपको डेसिमल पुट करना है और आपका आंसर आएगा 2.75। अंडरस्टैंड? ओके, सो फ्रैक्शन एज अ डेसिमल एंड डेसिमल एज अ फ्रैक्शन. If we want to convert fraction as a decimal, convert the given fraction into a equivalent fraction with denominator 10, 100 or 1000. Okay, understand? Keep the decimal point before the number in the numerator as many digits as number of zeros in the denominator. If the number of digits in the numerator are not equal to the number of zeros in the denominator, then add 0 to the left of the number to make it equal. Understand? If in case of mixed fraction, keep the whole number as an integral part and proceed as in step 1 2 3. Suppose, let's see what we do. Okay, let's see if the number is this type. If we want to convert 8/100 into decimal, so what you do, if we want to convert 8/100, so here how many zeros are here, 2, बट ऊपर की साइड तो आपको ओनली 1 डिजिट दिख रही है, तो आप क्या करेंगे इस केस में, आपको इस टाइप से लिखना है 08. ओके, 0.08. बट अगर नंबर इस टाइप से है 7:1/4, देन व्हाट यू डू, आपको 7 तो एज इट इज़ ही रहेगा, 1/4. 4 को आपको क्या करना है, इसको आप लिख लेंगे 7. 4 को आपको 100 बनाना है. ओके, 4 को आपको 10 तो नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें आप 4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 10 आ जाएगा, बट ऐसा नंबर है जिसमें आप 4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 25. सो दिस विल बिकम 100. सो यू गेट 25/100. नाउ हाउ मेनी zeros are here, 2. So you have to see what is the number, 0.25. Okay, so you have to write 7.25 is your answer. Okay, this method you have to do when you have to convert fraction as a decimal. Okay, understand? So now if you want to talk addition and subtraction of two decimal number, then here it is same, because if there are unlike decimal, then you have to convert it into like decimal, then you have to
add or subtract two decimal number. Okay, convert the given decimal into like decimal, then arrange the digit as per place value in column with their decimal point directly below each other. Add or subtract as do in case of numerical. ओके जो भी आपके क्वेश्चन में दिया है वो करना है. डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड इन द सेम प्लेस एज द नंबर अबोव इट. ओके, सपोज द हियर डायरेक्ट इज मल्टीप्लिकेशन. ओके, see one example. If we want to add two decimals, suppose let's take one example, 8.6 plus 15.123. okay, so here after decimal 3 digit here and here only 1 digit are here. okay, so what we do, first we convert it into like decimal. okay, now it is converted into like decimal. okay, now you have to add it. so आपको क्या करना है, उसे कॉलम में लिख लेना है. then 15.123 आपको दोनों को प्लस करना है. डेसिमल के नीचे डेसिमल. 8 + 5 13, 1 carry out 2. so your answer is this. okay, so whenever you want to add and subtract two decimal numbers, so first convert it into like decimal and then arrange it into place value. okay, place value column and add और सब्सट्रैक्ट. जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए वो आपको करना है. एडिंग 0 आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ एनी डेसिमल नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डेसिमल. इफ़ यू ऐड ज़ीरोस आफ्टर द, अगर आपको लाइक डेसिमल बनाते वक्त उसको जीरोस में ऐड करना है तो वो आपकी डेसिमल की वैल्यू को चेंज नहीं करता है. ओके, अंडरस्टैंड. हैव अ गुड डे.